welcome. You're watching Money9's latest show, Wealth Creators, a show where we talk about those stocks that have given robust returns to investors' portfolios in the past and also share an outlook on those stocks also with you as to what are the brokerage houses talking about. And with me is today Rahul Oberoi, my colleague, joining in from the Noida studio itself. Rahul, good morning and thank you very much for joining in. Let me first begin by understanding from you. Of course, we have done this entire series on wealth creators already that has garnered huge interest from our viewers also. And we've talked about not just, those stocks which are like maybe in the small cap category, but also in the large caps and the mid caps as well. We've spoken about different categories and also sectors that, these stocks are from. But today, you've picked out something very interesting and a very different category. Which is this category that you picked up this stock from, and which is the stock that you're talking about today? Sure. So Sakshi, today we are going to talk about a small cap stock, which is from aquaculture. Okay. So the stock has given more than 18,000% return in the past 10 years. तो क्या है इसका नाम? इसका नाम है अवंती फीड्स. Okay. तो अगर इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 85% जो इसका रेवेन्यू है वो श्रिम्प फीड को मैन्युफैक्चर और सेल करके आता है, और 15% जो है श्रिम्प को ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे कमाते हैं. तो इनका जो मेन मार्केट है वो है यूएस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन. Okay, fine. So Avanti Feeds is what we are talking about. This stock has given robust returns to investors in the past. Rahul, help us understand with the numbers especially, what kind of returns have we seen in the past, and for investors especially, what is there to look forward to it? Sure. So if we talk about return, as I told that the stock has risen more than 18,000% in the past 10 years. So it means that those who invested just 55,000 in this stock in 2011, so their present value is right now is more than 1 crore. Okay. So this kind of return the stock has generated during the past 10 years. Absolutely. So back in, if you see 2011 that you're talking about, the share price was somewhere around just 2.5 rupees per share. Yeah, 2.5. And at that point in time, if somebody had invested about 10,000 rupees, they would have collected like a huge amount of wealth, a huge corpus for themselves. 18,800% is the kind of return that we've already seen for this company and the stock movement so far. But help us understand, Rahul, that the kind of movement that we have seen so far, we are not seeing that kind of move right now. So what is the reason behind the underperformance in Avanti Feeds that we are seeing currently in the last 2 or 3 months when the markets have had a sharp run? Sure. So if we talk about underperformance, so the stock is consistently underperforming benchmark index since 2016. और अगर हम सिर्फ पिछले एक साल की बात करते हैं तो जो स्टॉक है वो अराउंड 57% का रैली किया है पिछले एक साल में, एज कम्पेयर टू 85% रिटर्न गिवन बाय सेंसेक्स. तो जो मेन रीजन है, इसका जो रीजन है थोड़ा स्लो डाउन का जो वरी है, और जो कोविड-19 का जो रिस्क है सेकंड और थर्ड वेव का, वो इसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है इस समय. एब्सोल्युटली. और देखा जाए तो जो लॉकडाउन का इशू था, ज्यादातर इस कंपनी का जो कारोबार है वो देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड ही है, और बीच में काफी एक्सपोर्ट्स को काफी नुकसान हुआ था, काफी हिट हुए थे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द बॉर्डर्स बीइंग सील्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इनिशियल ईयर. एक वो रीजन हो सकता है कि इसका अंडर परफॉर्मेंस है. लेकिन जो ये 18,000% तक का शार्प रिटर्न हमने देखा है पिछले 10 साल में, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ इसको बैक करता हुआ नजर आया, और क्या वही फंडामेंटल्स या वही रीजंस आगे भी इस स्टॉक को आगे बढ़ने में मदद करेंगे? श्योर. सो साक्षी, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट शेयर प्राइस आर अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स. तो अगर आप अर्निंग्स पे नजर मारते हैं तो इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में 40% एनुअलाइज्ड सेल्स रजिस्टर की है ग्रोथ. और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट जो अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का रहा वो अराउंड 385 करोड़ का रहा है, एज कम्पेयर टू अ लॉस ऑफ 1.85 करोड़ इन 2011. तो काफी कंसिस्टेंटली इनका प्रॉफिट जो है ग्रो किया है. बट अगर इनके हम पिछले 7 साल की बात करते हैं तो इनका जो 7 साल में जो रेवेन्यू है वो मोर देन 30% से ग्रो किया है, और पिछले 1-2 साल में आने वाले 1-2 साल में जो उम्मीद है वो लगाया जा रहा है कि 8% से रेवेन्यू ग्रो कर सकता है. Okay, so sharp fundamentals, financials have really helped the stock to really rise with the way that it has risen. It definitely commands a whole lot of market share in the kind of business that it has. In fact, it has a monopoly over there as well. So that is something that is working for the company, and the robust financials have definitely aided that as well. But going forward, Rahul, if I were to ask you that, in case there are any risks that all the investors should be aware of for this company stock going forward, what would they be? Sure. As I said, कि COVID-19 is the major risk.
अगर सेकंड और थर्ड वेव कोई आता है तो इनके रेवेन्यूज पर, इनके सेल्स पर थोड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज ज्यादातर जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट्स का है। तो अगर डिमांड कहीं ना कहीं कम रहेगी, चाहे वो श्रिम्प फीड हो या श्रिम्प्स की हो, तो जरूर इनके बॉटम लाइन पे थोड़ा सा फर्क देखने को मिल सकता है, और अंडर परफॉर्मेंस में भी कंटिन्यू रह सकती है नियर टर्म में। Okay. But what are the top brokerage houses really recommending to investors on this? Is it a good time for investors to look at this stock as a potential long-term buy? Will this add on to their portfolio as a wealth-generating stock like it has been in the past so far? श्योर। सो कंपनी को अभी जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इसी वीक अपग्रेड किया है टू बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 560 रुपीज। तो इनका जो मानना है कि जो आरओई है वो स्टेबल रहेगा आने वाले टाइम में, और जो प्रॉफिट है, जो सेल्स है, वो हाई सिंगल डिजिट में ग्रो कर सकता है डिस्पाइट दिस कोविड-19 रिस्क। Okay, so ICICI Securities has given an upgrade and has upgraded the stock to a buy listing, as well as 560 rupees is the kind of target that they are expecting on the stock as well. So still a potential buy. Most of the top brokerage houses are still positive on its growth chart going on from here. Thank you very much, Rahul, for sharing this stock with us, which has definitely given robust returns to investors. But let's quickly take a look at how the markets are trading at this point in time. 49,819, again an addition of about 810 odd points for the Sensex. So the rally with a gap up has actually got extended. 1.65% of an uptick is seen right now for the Sensex today. When you talk about the Nifty 50, 1.7% uptick is being seen over there too. 14,758. That's the level at which the Nifty is performing with an addition of about 250 odd points. जब हम अगर निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अब तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है, ऑलमोस्ट इन टैंडम विद द बेंचमार्क इंडिसेस। निफ्टी बैंक भी मूव कर रहा है 33,893 के लेवल्स पर। 574 पॉइंट्स का एडिशन यहाँ पर हुआ है। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करेंगे तो एक्सटेंशन यहाँ पर भी रैली का हो रहा है। हालांकि बेंचमार्क इंडिसेस से फिलहाल के लिए ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन 1% तक की बढ़त अगर आप देखेंगे तो मिड कैप में देखने को मिल रही है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगर आप देखेंगे 167 ऑड पॉइंट्स यानी कि 0.8% अपटिक के साथ ही कामकाज हो रहा है। तो बाजार में तेजी है, देखना यह होगा क्योंकि ये ट्रंकेटेड वीक है, एक हॉलिडे शॉर्टन्ड वीक है, 3 ही दिनों का ट्रेड हो रहा है इस हफ्ते। तो क्या वॉलेटिलिटी एक स्पॉइल स्पॉट कर सकती है इस कंटिन्यूअस बुल रन में जो आज हम सुबह से देख रहे हैं, और क्या इस रैली को कहीं ना कहीं रोक सकती है या नहीं? तो इसके लिए आप बने रहिए मनी 9 पर, क्योंकि लगातार मार्केट्स के अपडेट्स और पर्सनल फाइनेंस के अपडेट्स आपको यही मिलते रहेंगे।